बड़ी न्यूज़ तो फ्राइडे शाम इनफैक्ट सैटरडे को आई, क्योंकि हम सलील पारेख जी से खुद बात कर रहे थे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देने के बाद भी टेक्नोलॉजी स्पेस इंडिया में एक बेयर ग्रिप में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से बहुत चल गया था। दूसरा, आप नैस्डैक और यूएस के जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वहाँ करेक्शन देख रहे हैं, तो सिंपैथी में थोड़ा यहाँ भी करेक्शन आ रहा है। भले ही हमारी जो बैक होम इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, लार्ज कंपनीज, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी, नेट कैश कंपनी है बुक्स पे, उसके बावजूद थोड़ा करेक्ट हो रही है। लेकिन माहौल कैसा लग रहा है डिमांड का? जब हमने सलील पारेख जी से बात की थी सैटरडे को ईटी अवार्ड्स में, आई सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। As of now, this last week's sessions, clients still look very positive. We have none of that concern. Of course, everyone's reading about what's going on with the inflation. But today, what's happening is the digital spend is still critical for companies, and they're using both their OPEX and the CAPEX. So the digital spend is there. Okay, and we have been hearing from managements that we are in this IT upcycle from the last 12 to 18 months. Where are we in that cycle? Are we past the peak, or the peak is still ahead of us? Well, the opportunities are really quite large in front of us. All companies want to do digital, want to do cloud, and we are in the early stage of that work. The clients we are working with, we see a lot of work in the future. Okay, and let me talk about the supply side issue, and the one which has been plaguing the industry for the last 12 months has to be attrition, right? It still continues to be over 20% for a lot of companies, including yourself. Has it plateaued? Are things looking better, or do you expect it's gonna get a bit worse before it gets better? So there again, this last quarter we saw inflation coming down about 5 points for Infosys. Okay. And we see now a lot of the initiatives we've taken are starting to give some benefit. So over the next few quarters, we start to see this becoming more and more in control as we go out. Okay, and let me try and put you on the spot and ask you, 13 to 15% growth guidance, people are thinking it's a tad bit conservative. Are you just being conservative, or there are some headwinds that you're accounting for? So 13 to 15, as you know, is a function of what we've already been in contract with, which is very strong large deals, 9.5 billion, and what we see in the future, which is very strong uptake. You might also have noticed last quarter we had 22,000 new employees that joined. Right. So we are building definitely for a good growth for this year. What about not just this year, but what about medium term? And in terms of the employee additions, etc., is that kind of run rate likely to continue going forward as well in FY23? So the medium term, we don't have a guidance, but what we see is the digital work is massive. So as long as we build the capability on digital and cloud, we feel that we will continue to do well. शर्मिला, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो करेक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कहाँ पे आप अक्यूमुलेट करना चाहेंगी, कहाँ पे आपको कंफर्ट है रिस्क रिवॉर्ड में? क्योंकि एक तरफ तो ये वैरायटी है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, जो हेल्दी रिजल्ट्स के बाद भी, क्योंकि नैस्डैक में करेक्शन हुआ, यूएस टेक स्टॉक्स में करेक्शन हुआ, तो यहाँ भी करेक्शन हो गया और शायद चल भी गए थे। दूसरा, एलटीआई मर्जर आया माइंडट्री के साथ, मिड कैप्स भी काफ़ी करेक्ट किए। कहीं यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव लेवल्स नजर आ रहे हैं, या आप वॉच आउट फॉर कर रहे हैं कि जहाँ और गिरेंगे तो ऐड करना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक एज यू सेड कि थोड़े बहुत स्टॉक्स चल गए थे, मिड कैप काफी चले थे, लेकिन लार्ज कैप इतने नहीं चले थे। लेकिन रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं कि करेक्शन आ रहा है, एंड आई थिंक गिवन द फैक्ट कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, हम थोड़ा और यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे डिस्कशन चल रहा था कि ये थोड़ा सेंटिमेंट नैस्डैक का स्पिल ओवर होता है इस पर, एंड यहाँ पर इवन डील विंस आर गुड, एंड यानी रिजल्ट्स भी काफी ठीक आए थे, फिर भी उसका इम्पैक्ट तो आएगा। So I think within the large cap I continue to like HCL Tech, and मेरे हिसाब से आपको mid caps पर भी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, because very honestly I think mid caps have given better returns than the large caps. So large caps आप जरूर रखिए as a part of your portfolio, लेकिन from a returns perspective आपको एक दो mid cap IT के नाम होना जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। So but for mid cap I would wait for numbers, क्योंकि mid cap के numbers इस क्वार्टर में यही एक्सपेक्टेशन है कि कुछ मिड कैप्स के ठीक ठाक आएंगे, आईटी स्टॉक्स के, लेकिन कुछ के थोड़े बहुत खराब आ सकते हैं। आई डू लाइक माइंडट्री एंड लार्सन, द एलटीआई बिट। आई डोंट नो कि ये मर्जर का किस तरह का इम्पैक्ट होता है स्टॉक प्राइस पर, बट एलटीआई हैड ऑलरेडी करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आई थिंक नतीजे इतने ये क्वार्टर अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो उसके पहले ही वो करेक्ट हुआ था।
So this becomes an interesting stock to watch. So stocks like that, I think आप pick and choose कर सकते हैं. Results के बाद you can take a relook. But मेरे हिसाब से ये जरूरी है कि आपके पास मिक्सचर हो, आपके पास 2-3 मिड कैप और 1-2 लार्ज कैप स्टॉक्स हो. As I said, in the large cap, I like HCL. ओके ठीक है, तो शर्मिला ये बात अपनी रखते हुए एक चीज़ रुद्रमूर्ति आप जरा चेक कीजिए